Hello guys, today finally we are in for the last lecture that we have, that CET analysis. Now understand this. This is, although this is the last, but this is the most important lecture that you are going to attend from me. You need to understand that CET analysis, that means the mock test analysis that you're going to do, that is going to define कि तुम्हें तुम्हारा कितना growth होता है. That is going to show you what your trajectory is as you progress in CET, as you keep taking your mock tests. And most importantly, that is going to tell you what you need to improve on. तुम्हारा प्रिपरेशन कहाँ पे वीक, कहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है, वो तुम्हें ये बताएगा. You'll get a sectional understanding कि कैसे तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है, कैसे तुम्हारा ग्रोथ नहीं हो रहा है. Okay, so this is the most important thing. Now you must understand, analysis का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ये देखना कि मेरा क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ. This is what most people do. Now understand this. CET कितने लोग देते हैं? Any idea how many people take the CET? Exactly 1 lakh, a little over 1 lakh, around 1.2 lakhs जितने लोग लेते हैं CET every year. Registrations are 1.2 lakh and the people actually taking it are 1.1 lakh. Don't worry about it हितेश, मैंने एक्सेल शीट बनाया हुआ है, मैं तुम्हें वो लिटरली दे दूंगा, प्लीज वो यूज करो. तुम्हें बस उसमें अपने मार्क्स डालने हैं एंड हो गया तुम्हारा एनालिसिस तुम्हारे सामने होगा. डोंट वरी अबाउट इट. I made a very visual Excel sheet, so that'll be really helpful. Okay, so yeah, around 1.2 lakh people. Now tell me, out of the 1.2 lakh people who are taking the CET or 1.1 lakh who are taking the CET, how many people are actually serious about it? Uh, 20% is too high. I would say maximum 10,000 लोग serious होते हैं. Maximum 10% लोग, that is 10,000 people. And on 10,000 में से you'll see barely 1,000 people who actually analyze their mocks. Now understand this, analysis, although it is a very lengthy process, I'm not going to shit you, it is a very lengthy process. तो तुम्हारा analysis, अगर तुम analysis में आधे घंटे 1 घंटे जितना टाइम डाल रहे हो, then I can tell you on your face कि तुम्हारा analysis बराबर नहीं हो रहा है. You must understand that analysis takes time. You have to literally deep dive into what you have done in the exam and what you need to improve on. That is exactly what analysis means. To understand not about this test, but to understand about your future tests, कि तुम आगे क्या करोगे. That is what analysis means. Okay. So today, for example, since you guys have taken, a few of you guys have taken the mock test, we are going to analyze a mock test by our very dear student. तुम सबको नाम तो पता ही है. Any guesses? या हम नाम जिनको पता है उनको पता है, अदरवाइज तो मजा ही है. Yeah, so let's go on to the actual mock test. एक मिनट खाली guys. Yeah, is everybody able to see my screen? सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? Okay, great. So this is, as I told you all, this is the SimCET 7. And IMS का mock है. Dhiren has taken the IMS का mocks. Don't worry, even if you don't have IMS mocks or if you have any other mock test in the world, I would highly suggest कि एक mock test तो जरूरी है. मतलब you can't not give a mock test and expect to score well in CET. Mock tests are very important. तो वो तो तुम I guess कोई ना कोई mock test देने वाले हो. सबका analysis का तरीका same होगा. The only helpful thing in IMS is that they do a lot for you. That is the best thing about IMS, कि वो लोग तुम्हारे लिए बहुत सारा analysis करके देते हैं. Okay? Ashish, that's a good score. You have to improve on it a little. चलो. So here we have been given that he has a total of 95 marks. जिसमें से कितने marks कहाँ से निकले? But this is something that we should not be interested about. What we should be interested in is this part. जो area wise summary तुम्हें हर कोई देता है. This is something that everyone will give you. Okay?
तो इसमें देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ओवरऑल उसको 95 मार्क्स आए एंड हिज अटेम्प्ट्स वर 146, 95 जिसमें से करेक्ट थे. सो बेसिकली आउट ऑफ द ओवरऑल अटेम्प्ट्स उसने 65% सम्स राइट किए. His accuracy is this much, and the time he took was 2 hours 30 minutes. मतलब उसने जब दिया तो 150 minutes था. You guys have to just downsize it to 2 hours. That's up to you. But this is the time attempted per question. Guys, tell me, is this of any importance? Is the metric that you see 56 seconds, is it of any importance? Okay, I'm seeing a lot of yeses. And no, you guys are absolutely wrong. This is of no importance. Because this is overall time attempted per question. इससे तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होने वाला है. Now you must understand कि overall तुम्हारा कुछ overall तुम calculate करने ही नहीं वाले हो. What you are going to calculate is either sectionally, depends on how deep you want to go, either sectionally or topic wise. मतलब LR में specific LR puzzles में तुम्हारा कितना marks, कितना time per question जा रहा है. Specifically जो English के questions है उसमें तुम्हारा time per minute कितना जा रहा है. That is what you guys need to work on. यहाँ देखो for example ये जो 4 है ना, ये 4 numbers नीचे वाले, these are the ones which hold any importance. Because overall देख के तुम कुछ नहीं उखाड़ लोगे. You have to know तुम्हारा marks per minute. Also the overall marks per minute is absolute bullshit. तुम्हें वो कुछ काम नहीं आने वाला है. What you need to understand is ये 4 marks per minute तुम्हारे अच्छे होने चाहिए. Don't worry, I've given you ideal values for all of them so that you can score well. Now understand this. Abstract में 35 seconds per question is his average time. LR में 56 seconds. Now Dhiren can answer this better. Dhiren, had you attempted more of puzzles or had you attempted less of puzzles? Because तुमने 146 attempts किए हैं and logic में 61 है. तो तुमने सारे puzzles attempt किए थे? नहीं sir. Okay, great. Dhiren, since it's your analysis, I would suggest that you talk it out only, जैसे तुमने अभी बोला. Okay, so that everybody can listen to you. Okay sir. चलो. And with the quantitative analysis, now understand this. QA में इसका time बहुत ज़्यादा है. इतना टाइम तुम नहीं दे सकते. You can't afford to give in so much time. And the same with VARC. VARC में Dhiren, I assume that sentence arrangement and RC were the questions which took you the most time. I did not attempt RC to be honest. Sentence arrangement में मेरे को problem हुआ since I was not मैंने practice नहीं किया था. आपका lecture भी नहीं देखा था and काफी बड़े थे sentences. Okay, चलो. It took me time. So now the good part about this is we can straight away go sectionally. तुम अगर डिटेल में जाओगे ना guys, this is something again that many of the classes do, many classes don't, but इसमें है तो काफी फायदा हो जाता है. We can straight away go sections wise. देखते हैं. Let's watch the VARC. VARC में let's look at all the areas. Let's specifically first look at reading comprehension. RC में हम अपने हिसाब से देखते हैं इसका टाइम कितना जा रहा है. These are questions जो इसने सॉल्व किए ही नहीं. So look at it. RC इसने ज़्यादा सॉल्व ही नहीं किया because a dash means उसने सॉल्व ही नहीं किया. He didn't attempt it. Right, wrong कुछ नहीं. But if you understand, Dhiren, here you spent 22 seconds but you didn't mark anything. That means you absolutely wasted those 22 seconds. At least उसमें कुछ mark कर लेना चाहिए था. Considering CET, you cannot leave something where you have spent time. And if you consider that to be a C type question, at least in the English section, तो इतना time उसमें नहीं जाना चाहिए. For everyone, that is very important. The same year, 46 seconds and nothing solved. And this for an RC question. Now let's check कौन से number पे वो था. जो check the question. 2 minutes 45 seconds. I assume that's a starting of a new RC. तो उसमें तुमने बहुत ज़्यादा टाइम डाल दिया बट फिर भी गलत किया. The same जो नीचे वाला था 1 minute 25 seconds ज़्यादा टाइम है for an English question. उसमें तुमने फिर भी राइट किया. Now guys, let me try to show you कि तुम इसको एनालिसिस में डालोगे कैसे. Are you guys able to see the Excel sheet that I'm showing on the screen? दिख रहा है, right, guys? Okay, great.
Now what we have to do is I made an ideal Excel sheet for your analysis. Now understand this. What I used during my analysis was this. Like this is a उसमें ज्यादा मैंने डाले नहीं है. Now understand this. मैं इधर परसेंटाइज डालता था एंड हर एक का मैं अटेम्प्ट्स कितने करेक्ट अटेम्प्ट्स परसेंटेज एक्यूरेसी परसेंटेज टाइम एंड मार्क्स पर मिनट कैलकुलेट करता था उस हिसाब से. एंड फॉर ऑल ऑफ दीज व्हाट हेल्प मी द मोस्ट इज दिस पार्ट. दिस इज द बेस्ट थिंग दैट विल एवर हेल्प यू. And in that also, today I'm going to teach you a few tricks in Excel also that will really help you out on how to analyze your mocks. Now guys, understand this. This is what you guys are going to use. तुम्हारा ओवरऑल कितना स्कोर्स एंड सब कुछ आया है मार्क्स पर मिनट ओवरऑल. एलआर में स्पेसिफिकली, वीआरसी का स्पेसिफिक एंड क्यूएडीआई. What I suggest is abstract का इतना एनालिसिस करने का जरूरत नहीं है. Abstract is fine. You guys just must understand कि तुम्हारा abstract में स्कोर 20 से नीचे नहीं जाना चाहिए एंड तुम्हारा टाइम 15 मिनट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए. So the maximum time that you can put in for abstract is 15 minutes and score 20 marks in that. सिर्फ इतना ध्यान में रखो, उसका एनालिसिस स्पेशली करने की जरूरत नहीं है. But what you need to analyze is these three. These three are too damn important. Also, what I suggest, what no other person does, no other place where I've seen analysis ka Excel sheets they do, is give you a visual representation. Okay guys, tell me this. Should you ever be worried of scoring less marks? और समझो अगर एक टेस्ट तुम्हारा खराब चला गया, परसेंटाइल खराब आ गया, should you be worried about that? Exactly. You need not worry about that at all, because understand this. Everybody has bad days. Everybody scores wrong. समझो अगर वो वाले टेस्ट में स्पेसिफिकली वैसे क्वेश्चंस पूछ लिए जो तुम्हें नहीं आते, so that is going to screw you. That is going to give you less marks. You need not worry about that. But you must understand that तुम्हारा जो ओवरऑल ग्राफ होना चाहिए ना, वो ऊपर जाना चाहिए. It should be tending to go upwards. ये जो मैंने तुम्हें एक्सेल शीट बना के दिया है, ये वाला, this is for your proctor test. So IMS में दो टाइप के होते हैं, सब अलग अलग नाम रखते हैं. IMS calls it proctored and unproctored test. जो 8 टेस्ट मिलती है where you are compared to other people, and the 12 are take home tests जो unproctored test बोलते हैं वो लोग. Time calls it SAM CET and AM CET. SAM CET is unproctored and AM CET is the proctored ones. So everybody has different names for it. But don't worry, सबका logic same है, सब में तुम number से समझ जाओगे. I have given a few ideal values for each and every one. Okay, now guys, I want you to understand. Hemant, proctored का मतलब there is a proctor who is looking after you. So proctored test for IMS are basically where you are taking the test in a center. Once the centers open up, IMS centers open up, you guys will be allowed to go to the IMS centers and take the test. उनके center पे. That is helpful very much because you get to understand how is the feeling of giving a test outside your home, outside your comfort zone. And that is why guys, I highly suggest whenever you're taking a mock, चलो अभी ठीक है, start है, but by February start to February end, तुम जब भी एटलीस्ट समझो अगर तुम महीने में 20 मॉक देने वाले हो या फिर 15 मॉक जैसे भी तुम देने वाले हो, यू मस्ट अंडरस्टैंड एटलीस्ट उसकी आधी मॉक्स बाहर से दो. And by bahar, I mean go to your friend's place, go to your relative's place, go to a fucking cafe for God's sake. It doesn't matter. Starbucks में जाके बैठो, वो लोग कुछ बोलते नहीं है. कोई शांत वाला Starbucks में जाके बैठना, for God's sake. Go to any place जहाँ पे शांति हो, एक छोटा सा कोना पकड़ो and take your test there. Sorry about that. That will help you understand. क्योंकि देखो, trust me, last year the center that I had gotten, नीचे शादी चल रही थी. And it was absolutely noisy. And obviously, I can't tell them कि यार शादी में आवाज मत करो. The school has no right to tell them. But उतने आवाज में भी CET देनी पड़ी. So you guys can't rest assured कि यार CET अच्छी जाएगी because centers तो अच्छे होते हैं. No, ऐसा नहीं होता. इस बार मेरे जो आया था वो बहुत शांत था. वो इतना कोई सुनसान एरिया में था that I can't even imagine कि क्या था. Top scorers say we didn't judge. Ashish, you can't judge based on top scorers. We can take an average of the top 10 people कि कितना आया था. On basis of that, you can understand कि overall कितना था. But understand this. Okay, guys. So in the overall analysis of a mock, the two most important things are your overall percentile and your attempts. Guys, tell me what is the ideal attempt, as I've even written here, and I also told in my session that I conducted for you guys. What is the ideal number of questions that you must attempt?
हितेश कुछ भी यार. 160. 160 for the 120-minute timer is an ideal number of questions to attempt. With an accuracy of 75%, you will score a 120 marks. Now understand this, 75% accuracy is not at all difficult. You will understand as we go ahead in the lecture. तुम्हें ज़्यादा difficult नहीं लगेगा 75% accuracy. It is very much doable. And let's just check the scores. 50, एक मिनट खाली 85 and 115. Okay. For the mock that we have just taken here, मैं बस ले रहा हूँ जो पहला मॉक मैंने लिखा हुआ है. At a 160 attempts, इन तीनों का टोटल, जस्ट चेक द LR, VARC एंड QA का टोटल. मैं आइडियल टोटल्स की बात कर रहा हूँ. 50, 35 एंड 30 मार्क्स. नाउ गाइस टेल मी, LR के ओवरऑल 70 में से 50 मार्क्स लाना, इज दैट अ बिग डील? 45 से 50 मार्क्स आराम से आ जाएंगे. इट्स नॉट अ बिग डील. बात में सेम विद VARC. VARC में 35 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात है क्या? Like once you guys are very well prepared, what are your average marks that you guys are scoring? Tell me. Is my voice breaking for everyone? अच्छा लैग आ रहा है क्या? Okay, just a minute. Just give me 1 minute. I'll get it sorted immediately. So yeah. So guys, as I was telling you, getting a 35 marks out of 50 marks in English is not that difficult. Do you guys agree that 35 marks is very much doable in English? तुम्हें 15 marks का लीवे दे रहा हूँ मैं. That's around again a 75% accuracy. Now get this, the marks that I'm telling you guys are very simple. 35 English में लाना है, 50 लाना है LR में, and तुम्हें लाना है QA में 30 marks. Now 30 marks में तुम्हारा DI इंक्लूड हो गया and quants भी इंक्लूड हो गया. DI, DS and quants ये तीनों इसमें इंक्लूड हो गए 30 marks. Now even if you just total up these three, just whoever is doing their speed maths properly, just ये तीनों का टोटल करके मुझे बताओ. Exactly 115. What is the ideal score that I told you guys? 120. 120 में से अगर 115 तुम्हें ये तीन से आ गए, तुम्हारे पास एब्स्ट्रैक्ट का स्टिल 15 से 20 मार्क्स जितना तुम्हें मिलेगा वो है हाथ में. So you still will be scoring a 125 to 130 to be very conservative. समझ रहे तुम लोगों को guys? Does everyone understand? Hemant, exactly. See, the breakup makes it easy. The breakup of marks makes it easier for you guys because तुम लोग ने CET को बहुत बड़ा बना के रखा है तुम्हारे दिमाग में. You don't have to make it so big. Now let's understand this. Now let's put Dhiren का whole test in this and then we'll see कि क्या फर्क पड़ता है. The ideal में and अपने वाले में, like Dhiren वाले में क्या फर्क पड़ता है and where he could have scored better. Okay? चलो. Let's go to the summary. देखो उसने एब्स्ट्रैक्ट में 20 मार्क्स लाया एंड द टाइम दैट ही पुट इन वाज, अच्छा इसमें या टोटल टाइम वाज 14.47. सो दैट वाज रियली गुड. एब्स्ट्रैक्ट बाजू में रखते हैं. लॉजिकल रीजनिंग में ही अटेम्प्टेड 61 बट ही स्कोर्ड अ 41. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट फीडिंग द नंबर्स हियर.
वेरी सॉरी, आई एम नॉट यूज्ड टू यूजिंग अ मैकबुक. तुम लोग के लिए मैंने यूज किया है ये. So yeah, let's feed in the LR का marks. LR में his attempts were 61. He scored a 41 in 1 hour and 7 minutes. Now I don't want anyone else to answer this. Dhiren, you tell me, 1 घंटा is it worth giving 1 hour for LR जब तूने सिर्फ 60 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? No. Yeah. So where do you think you could have gotten better? I guess critical reasoning में, you know, I gave in a lot of time and I did not score anything. I guess the overall marks in critical reasoning I got is around 2 or 3 out of 9, 10, whatever the overall thing is. So either वहाँ पे time भी ज़्यादा दे दिया है और wrong भी कर लिया. Okay. So guys, if you see here, Dhiren ka marks per minute in abstract is 0.683. That is very less. Now the ideal marks per minute that I say is not 1. For LR, it is different. It's 8.33. Similarly, for English, it is 1.4. And for Quant, it is 0.857. Now these numbers, you need not worry about it. ये कहाँ से आए? These are basically weighted average के हिसाब से मैंने निकाला है. To keep your overall marks per minute as 1. 1.1 रखा है to be on a safe side. So when you actually go in for the exam, you will score a 132 marks. उस हिसाब से weighted average के हिसाब से Quant में 0.85 चाहिए. VARC में 1.4 and that is not very difficult because तुम्हें 25 मिनट में 35 मार्क्स निकालने हैं in VARC. And in Quant, I'm telling you कि तुम लोग के पास 35 मिनट्स है. 35 मिनट्स में 30 मार्क्स निकालो. I'm telling you ज्यादा टाइम में कम मार्क्स निकालो. And still you guys have a lot of time. और चलिए सीधा टाइम. यहाँ पे 60, यहाँ पे 25. कितना हो गया? 85. 85 plus 35 कितना हो गया? 85 plus 35 कितना हो गया गाइस? यार प्लीज मेरा नाम मत बिगाड़ रहे. 120 मिनट्स एग्जैक्टली. सो अगर तुम सिर्फ ये 3 को भी तुम टाइम दोगे ना, सिर्फ ये 3 सेक्शंस को, फिर भी इट्स डूएबल इफ यू स्कोर वेल इनफ इन दीस 3. बट इसके ऊपर जितना में तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट में जाएगा, दैट इज ऑल रोकड़ा मार्क्स जो तुम लोग को आएगा. ओके, सो इफ यू गाइस वांट, इसको थोड़ा कम करके हम 32 कर देते हैं. इसको कर देते हैं 22 and let's bring this down to 58 57. तो तीनों में से 3 कम क्या? You have 9 minutes here. Now you have 10 minutes for abstract, but इसमें तुम जंबल अपने हिसाब से कर सकोगे according to your own comfort level. Okay? But अगर ये किया तो तुम्हारा मार्क्स पर मिनट बदल जाएगा. You will need a better accuracy. समझ रहे हो तुम गाइस? 32 minutes 40 अटेम्प्ट्स करो, बाकी के तुम्हारे तुक्के भी है तुम्हारे पास. Now don't worry about it. Okay? Now let's go on to the other one that he has done. Other section. Now we have quants which has 23, 16 and 38 minutes he has given. (23, 16, 38). So his marks per minute, acha, sorry, 23, 16 and 38. And finally is English, where he has scored 37, 18, 37, 37, 18, 37. We'll just go here. 37, 18, 37. So guys, now understand here. Now to understand कि धीरेन कहाँ कहाँ गलत गया. His overall marks per minute that he has scored, वो भी देख लेते हैं कितना है. 146, 95. Okay. 146 and 95. Okay. So guys देखो इसका and his time it should be 1. इसने 150 में किया था. So we'll keep this here as 150. So guys check this.
धवल का marks per minute overall is 0.63, which is way less than 1, which is the ideal marks per minute that I say. Then in LR का section, what Dhiren did wrong was that उसके attempts although ठीक थे, but his accuracy was very less. An average accuracy that he must maintain is 76.9% accuracy. These are all ideal numbers कि इतना तुम्हारा होगा तो तुम्हें काफी you will sail through the exam very well. That is what I am saying. Also जो नीचे वाले नंबर्स है डोंट वरी अ लॉट अबाउट इट, दैट्स फाइन. वो मैंने बस तुम्हें एग्जांपल, वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए तुम्हें दिखाया है, वहां पे लिखा है. सो डोंट वरी अबाउट इट, वो चेंज होता रहेगा तुम्हारे लिए. नाउ इन VARC, Dhaval, tell me something. 37 minutes in Dhiren, 37 minutes in VARC. Where do you think you lost out on more time? Sentence arrangement छोड़ के. सेंटेंस अरेंजमेंट छोड़ के याद नहीं है मेरे को, टू बी ऑनेस्ट. Okay, it's fine. So what I assume here is that इसका sentence, and we can also check it here by ourselves. Let's go to the detailed one. इसमें verbal reasoning. यहाँ पे देखो, ये दो टाइप के जो क्वेश्चन थे, ये दोनों क्वेश्चन में देखो. This is verbal reasoning. Choose the option that sentences complete the paragraph meaningfully. So para completion इसने slow किया, where he took in 2 minutes almost. वापस 1.5 मिनट इसने लिया ये वाले क्वेश्चन में, रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में. तो ज्यादा टाइम देना इतना is not feasible in an exam like CET. जंबल पैराग्राफ्स में इसने सारों में ज्यादा टाइम दिया है, सिर्फ एक में उसने सही किया है. So this was just one whole set of para jumbles. So Dhiren, if you are taking a para jumble, you must understand, अगर तुमने एक में टाइम दे दिया ना, take 1.5-2 minutes here, it's fine. Take 2 minutes. But 2 मिनट में तुम्हारे पांचों क्वेश्चन होने चाहिए, तो तुम्हारा per question 40 seconds जितना हो जाएगा. But you can't afford to put in more time on each and every question. तुमने यहाँ पे already 1.5 मिनट डाला, and then you are still taking more time on all these questions. Was that because you were unsure about your answer, or were you still trying to solve a little more? Yeah, I was actually unsure about it. I was still trying to solve it, एक बार confirm कर रहा था. That's why, second question में भी 44 seconds लिया, and somehow third, fourth question में वो confidence build up हो गया कि वही रहेगा answer. Okay, guys, tell me, where did Dhiren go wrong? Anyone? Tell me in the chat. Where did Dhiren go wrong here? Okay, yes, you are right. Rohit, you are right. I'm getting a few right answers and a few wrong answers also. Yeah. So where Dhiren went wrong here is that he started thinking more. Guys, once you find an answer, screw everything else. तुम्हें वो answer मिला है, mark it. Don't spend more time actually checking your answer कि वो सही है या गलत. You don't have time to recheck your answer. All you can put in time for is to solve it. अगर वो गलत solve हुआ चलेगा, सही solve हुआ then it's good for you. But if you actually put in time to check a question, then you're taking out time from again another question. ये क्वेश्चन गलत ही है. That means कि this is not a category question as you guys had thought it was. A category or a B category. Anyway, A और B कैटेगरी का क्वेश्चन तुम्हें वापस रीचेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. They will have a sure shot, simple one way answer. It's just that थोड़ा और टाइम कंज्यूमिंग होगा a B category. A category is immediate. So these are some things that you guys must understand कि अरे यार तुम इसमें टाइम नहीं डाल सकते. Now let's check Sir, also. I have one doubt. यही jumbled paragraphs में, as we can see, मैंने 1.5 मिनट पहले डाला and वो मेरे को गलत आया, and then almost all 1.5 मिनट पकड़ लो और मेरे को 4 right है. So it's 3 minutes and I got 4 right answers. What if I just put in 1.5 minutes? I'm very unsure about it. मैं पांचों wrong कर देता हूँ. Dhiren, you don't have to rush it. तुम्हें solve आराम से करना है. But you can't put in more time to check it, is what I'm saying. When you actually solved the first answer, when you got the first answer जिसमें तुम्हें 1 minute 29 seconds लगा, by that time तुम्हारे हाथ में एक arrangement था.
Is that right? Yeah. So you already had an arrangement. Trust that arrangement and move ahead. Don't check that arrangement again. You have invested in actually solving the question. That does not mean कि तुम्हें वो क्वेश्चन को करेक्ट भी करना है. समझ रहे हो? Got it. Yeah. Okay. Does everyone understand this, guys? जो मैंने धीरेन को समझाया सबको समझा गया? Is this a mistake that most of you guys are making? Okay, then it's a little problematic. See guys, understand this. तुम्हारे पास सॉल्व करने के लिए टाइम है, तुम्हारे पास क्रॉस चेक करने के लिए टाइम नहीं है सीईटी में. Now let's go to the LR section. Let's check कि इसको कहाँ ज्यादा टाइम लगा. All areas will straight away sort by time. ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. सुबु ओंजा वाला. अच्छा कुछ नहीं आ रहा. This is one question. This is a puzzle, I guess. This is a puzzle. Yeah, that's a puzzle. I assume that because 4 minutes 28 seconds. Yeah, guys, are you familiar with this kind of questions? The postgraduate requirement wale questions. These are the questions which are absolutely rokda marks. You guys cannot afford to be wrong in these ones. Yes, selection based. Hitesh, they are called. इसमें सिंपली तुम गाइस को क्या करना है, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन ऑन ए पेपर कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज है एंड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, एंड अगर वो रिक्वायरमेंट्स को जा रहा है टिक ईच एंड एवरी फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. पहले है ना क्वेश्चन पढ़ के वो रिक्वायरमेंट्स लिख दो. इन दिस यू विल हैव टू राइट इट डाउन. देयर इज नो वे टू जस्ट रिमेंबर इट. यू विल स्क्रू इट अप इफ यू जस्ट रिमेंबर इट. राइट डाउन द रिक्वायरमेंट्स एंड सिंपली जो भी पर्सन आ रहा है उसमें हर एक रिक्वायरमेंट को राइट 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 टिक मार्क मारते रहो. अगर किधर भी रॉन्ग आ गया दैट पर्सन इज नॉट सिलेक्टेड. खत्म. दैट्स इट. इतना इजी है. सो इन दिस आई डू अंडरस्टैंड कि कभी कभी स्टार्ट में तुम्हें टाइम लगेगा, बट एज यू गेट अ सीजन्ड मॉक टेकर यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इसमें तुम्हारा टाइम कम होना चाहिए. Sir, the ideal time for this type of questions? Ideal time for these kind of questions overall set कुछ ऐसा आइडियल टाइम ओवरऑल सेट नहीं होता बिकॉज हर क्वेश्चन अलग अलग होता है. बट आई सजेस्ट कि तुम्हें ऑन एन एवरेज इसमें पर क्वेश्चन अराउंड 30-35 सेकंड्स डाल सकते हो. दैट्स इट. उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए. ओके ओके चलो. सो नाउ लेट्स गो जस्ट फॉर द एलआर लॉजिकल रीजनिंग जो इसने दी है. धीरेन आई सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद अ लॉट ऑफ टाइम. 4 minutes 28. अगर इधर 4 minutes 28 है, although these are, I assume that these are all 5 different sets all together. But उसके बाद भी अगर तुम्हें इतने सारे क्वेश्चंस में इतना ज्यादा टाइम लगा है, that means you are again going and rechecking your LR के questions. ये वाला for example, this is not supposed to take so much time. So for example, this question you must understand इसको कैसे easily solve कर सकते थे, which is a 13th element to the right of the 8th element to the left of the 11th element to the right of the 7th element to the left of the 10th element from the extreme right end of the sequence. Guys, tell me, how do you solve this question? Adnan, you are right, and Dhaval, sorry, Adnan, you are wrong. Dhaval, Aditya, and Ved, you are right, and Hitesh, you are right. इसमें कभी सीधा सॉल्व नहीं करना है गाइस. यू हैव टू गो उल्टा इन दिस एंड ऑलवेज जस्ट अंडरस्टैंड इसमें कभी भी ड्रॉ मत करना. सिंपली बस क्या किसके राइट लेफ्ट में है. 10th साइड से एक्सट्रीम 10th फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड, तो उसके बाजू में और 9 जन है. 7th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ इट, तो 10th पे ऑलरेडी था, उसके बाजू में 7th, तो 17th फ्रॉम द राइट. 11th एलिमेंट टू द राइट ऑफ द 7th वन फ्रॉम द 17th वन फ्रॉम द राइट, मतलब 6th एलिमेंट आ गया. 6th element from the right. बाद में 8th element to the left, that is 14th element from the right, and 13th element to the right, that is the first element. So the answer should be F. समझा guys सबको? How do we solve this question? Dhiren, is this how you did the question, or did you actually write it down and actually start counting each and every one? No, yeah, I did it manually. I did not write it down. मैंने screen से ही किया था, but I did it manually. Okay, never do that again. Guys, does everyone understand कि कैसे किया मैंने? This was just an example of how can you make a question easier for yourself. Okay. वापस एक बार.
Adnan, okay, let me just show you. I'll just pull in this one. हमें बोला है कि 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड, तो यहाँ से 10th एलिमेंट हो जाएगा, तो वट एवर इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ए हो गया. ए. 7th एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ इट, तो 10th तो था, तो हम 17th ले लेंगे, सो दैट इज 3. आई कैन बी रॉन्ग बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. बाद में 11th एलिमेंट टू द राइट ऑफ इट, हम ऑलरेडी 17th एलिमेंट पे है, तो उसके राइट में 11th एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, इट विल बी द 6th एलिमेंट, दिस वन. बाद में उसके बाद 8th एलिमेंट टू द लेफ्ट, नाउ 6 से हम वापस 8 लेफ्ट में जाएंगे, विल रीच द 14th एलिमेंट व्हिच विल बी दिस वन. एंड उसके बाद 13th एलिमेंट टू द राइट. अगर ये 14th है, तो 14th के बाद 13th एलिमेंट टू द राइट कौन सा हो जाएगा, 14th element to the right will be, sorry, 13th element to the right will be the F1. So that's it. So this was pretty understandable. Ved, I would highly suggest, okay, guys, understand this. In CET, you guys are not stopped from using a marker on the screen. You can use it in these questions and especially in your abstract reasoning ka questions. It will become so easy if you use a marker. But it depends on your center. अगर तुम्हारे सेंटर में स्पेशली तुम्हारा जो भी सुपरवाइजर आ रहा है, अगर तुम्हारा सुपरवाइजर इज लीनिएंट इनफ, ही वोंट गिव अ शिट अबाउट यू यूजिंग अ मार्कर. मुझे लास्ट ईयर वाले जो सीईटी थे उसमें मार्कर यूज करने दिया था, ये बार भी यूज करने दिया. द सेकेंड टाइम आई कुड नॉट यूज अ मार्कर. आई हैड द सेम लॉजिक कि मार्कर यूज कर लेंगे तो स्क्रीन पे ही मेरा सॉल्व हो जाएगा काफी चीजें. दैट मेक्स इट वेरी इजी. ओके. Also number series you can solve with a marker on the screen. It becomes very easy. So please carry a marker regardless of what your center is. Carry a marker. तुम्हारे बाजू में रखो. They won't stop you from actually carrying a pen, marker or whatever the hell you want to carry. But try it. अगर वो तुम्हें रोके तो रुक जा. That's it. But try it yourself. अगर मिल गया तो तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है. Because that literally shortens your time of solving by a lot. Okay? So yeah guys, as I just said कि you have to understand कि कौन से क्वेश्चन में तुम्हें कितना टाइम लग गया. And for every question that you have done wrong, you must understand कि wrong question का तरीका ढूंढो कि कैसे हो सकता है, वो तुमने क्या गलत किया. And most importantly, ये जो right question उसने किया ना, whatever question Dhiren you have solved right, you must revisit that question and solve it in a lesser time. Especially for a question like this which took you a lot of time. Now अगर तुम इसमें verbal reasoning you know, verbal reasoning में 1 minute 21 seconds is very much. And ऊपर से तुमने 4 questions wrong कर दिए. The top 4 questions that you solving. Now guys understand this. Tell me what is the understanding behind this. अगर उसने 4 questions किए जिसमें ज्यादा टाइम लगा and चारों questions उसने wrong किए. So for the top 7 questions that he has solved, he has gotten, जिसमें उसने बहुत ज्यादा टाइम लिया है. Yes, for the top 7 questions that he has solved with the most time, he has gotten only 1 right. Now tell me, what is the meaning of this, guys? And all of these are critical reasoning questions. Brief passage, numbered conclusions, improving air quality, dementia, CEO. No, Sudeep, that does not mean that that's a B type of question. Now tell me, can anyone say, no way you are wrong? Dhiren, you tell me what is the meaning of this? How do you analyze this? कि तुमने ज्यादा टाइम डाला but still तुमने wrong किए बहुत सारे questions. Well, the only conclusion I can come up with, I'm not well aware with the topic only. Exactly. So that's very simple analysis, guys. Understand? That means this is a topic जिसमें वो time भी ज्यादा डाल रहा है and still he is solving it wrong. That means इसमें इसका accuracy भी एकदम घटिया है and इसका time भी बहुत ज्यादा खा जा रहा है topic. So either this topic he can put in a C category or he can make sure कि ये topic है वो improve करने की try करे. To rule out any topic right now as a C category is an absolute sin. अभी मत करो. C category तुम देखो, to push topics into the C category, like समझो अगर बहुत लोगों को permutation combination C category में डालना है तो ठीक है, but don't do it now. Do it Feb mid में.
तब तुम सी कैटेगरी का सोचना कि मैं कौन सी चीजें सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बट अभी से मत सोचो। अभी किधर भी ज्यादा टाइम लग रहा है तो पुट इन मोर टाइम देयर while you are practicing and practice that more, practice that harder. समझ रहे हो guys? Let's go back to the Excel. ये पूरी एक्सेल में तुम्हें कोई फॉर्मूला डालने की जरूरत नहीं पड़ने वाली. I have already put in all the formulas. What you simply have to do is just, अगर तुम्हें अनप्रॉक्टेड के लिए बनाना है तो you'll just duplicate this, rename it. Yes धीरेन, प्लीज आस्क द डाउट, चैट पे ही पूछ ले. धीरेन प्लीज आस्क योर डाउट, आई एम वेटिंग फॉर यू. For CR, the material we have is one-liner questions mostly. In mocks, we have 3-4 good sentences wale questions. Okay. So Dhiren, go on. You'll have to find more CR questions. देखो मैंने जो resources folder है ना, in my resources folder I have put in more files for a for CR. So उसमें बड़े वाले questions भी है, छोटे वाले questions भी है. Don't worry a lot about it. Yes. So guys, now understand this. तुम्हें जब अपने हिसाब से, if you, for any person who is not taking IMS mocks and is taking other mocks, जिसका breakdown कुछ अलग अलग तरीके से है, all you have to do is simply right click on this. इसका select data आएगा. ये जो data selected है ना, उसको थोड़ा और लंबा खींच दो, जिसमें सारे तुम्हारे मॉक्स कवर हो जाएंगे. So even the attempts, बस इसको ऐसे थोड़ा लंबा खींच दो. That's all you have to do. समझ रहे हो guys? It will give you your LR का marks per minute, how up and down it is going, your VARC का marks per minute, and your QA DI का marks per minute. Are you guys understanding it? सबको समझ रहा है अभी तक? Okay. Now please go on and ask me all the doubts that you guys have. I'm waiting for your doubts only. I have one thing to do after this, but I'm waiting for your doubts. जिसके बाद end में वो चीज हम करेंगे. जल्दी बताओ guys. Yes, Dhiren, 35 marks in 20 to 25 minutes, it is very much doable. I would highly suggest everyone do not skip your RC. Your RC is where you will score a lot of marks. Now guys, understand this. In RC, how do you score marks? In RC, you must understand कि बहुत सारे RCs में बहुत सारी generic information दी होती है. You don't have to actually read the RC for it. तुम्हें बहुत बार क्वेश्चन से ही वो जेनेरिक इन्फॉर्मेशन तुम अपने हिसाब से मार्क कर सकते हो. नॉट एवरी टाइम इट विल वर्क, बट व्हाट आई एम सेइंग इज यू हैव टू सेव टाइम, राइट? तो सेव टाइम सेव करने के चक्कर में यू कैन बी रॉन्ग समटाइम्स, बट इट विल इंक्रीज योर स्पीड बाय अ लॉट बिकॉज तुम्हें वापस पूरा पैसेज पढ़ना नहीं पड़ेगा.
अदनान अभी के लिए कोई भी टॉपिक ऑप्शन में मत रखो. व्हाट आई सेड इज फेब्रुवरी मिड इज द टाइम जब तुम कोई भी चीज को ऑप्शन में डालना चालू करो. अभी के लिए यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग. हर एक चीज का तुम्हें बेसिक्स आना चाहिए. क्वांट्स में डीआई और नंबर सीरीज के अलावा कुछ नहीं करेंगे तो चलेगा? नहीं रोहित, नहीं चलेगा, एब्सोल्युटली नहीं चलेगा. यू हैव टू डू योर क्वांट्स पूरा, बिकॉज नंबर सीरीज के गिन के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, उसके ऊपर नहीं आते. सो इफ यू वांट टू रीच तुम्हारे क्वांट्स में 30 मार्क्स, यू विल हैव टू सॉल्व योर डीआई एंड योर क्वांट. Ved. Okay, guys, Ved has a very good question. What to do when the strategy is not working while taking a mock? Okay. Just one for now. Stop sharing. Yeah. So, guys, we are back here. Ved has a very good question. Ki, what if the strategy that you are using is not working while you're taking a mock? Then what do you do? Guys, tell me, what do you do if this happens with you? अगर तुम एक स्ट्रैटेजी सोच के गए हो एंड वो मॉक में काम नहीं कर रहा. Okay, Dhaval, you are right. So guys, yeah, you basically simply adapt. Now, how do you adapt? You cannot have a very rigid or a very stubborn policy when you're strategizing for your mock. I'm really sorry. Yeah, you can't have that because you must understand. अगर तुम LR में बहुत अच्छे से prepared हो, but what if that day they have made the LR damn difficult? You can't afford. तुम्हें झक मार के तुम्हें करना ही पड़ेगा. एंड झक मार के तुम्हें एलआर छोड़ के एलआर में थोड़ा कम सॉल्व करके तुम्हें क्वांट्स की तरफ जाना पड़ेगा. यू विल हैव टू फाइंड आउट कि उन्होंने अगर एलआर डिफिकल्ट रखा है तो कौन सी चीज इजी रखी है, वो इजी वाली चीज तुम्हें सॉल्व करनी पड़ेगी. एंड रोहित, एज यू जस्ट आस्क्ड कि हम क्वांट्स छोड़ सकते हैं क्या, यू कांट अफोर्ड टू डू दैट बिकॉज जस्ट एज आई सेड, अगर एलआर बहुत डिफिकल्ट कर दिया तो तुम्हें कुछ भी करके क्वांट से मार्क्स निकालने ही पड़ेंगे. सो यू विल हैव टू मेक श्योर कि तुम अरे यार मैं क्वांट से भी मार्क्स निकाल रहा हूँ, अरे यार मैं इंग्लिश से भी मार्क्स निकाल रहा हूँ. यू विल नीड at least a level ground on all of them so that in case one is more difficult you can get marks out of the other. but अगर तुमने already quants छोड़ दिया है ना and अगर उन्होंने LR या फिर English difficult निकाल दिया, then you are done for, then you are absolutely screwed during the exam. Mugda, the analysis session that you're talking about for next week so that we can analyze your mocks based on what mock you have taken next week. That is what your one-to-one session with me is for. We analyze your mock together. We make sure कि तुम्हारा analysis कैसे जा रहा है, क्या सही क्या गलत हो रहा है. Okay? Adesh, what action to take based on analysis? Now understand this, guys. This is a part that I was just coming to. Guys, the first thing that you do after you have analyzed is understand कि कौन से section में तुम्हें ज़्यादा time गया. Now in this what I would suggest is if you guys require it, अगर तुम्हें नहीं समझ रहा then इसी sheet में और एक sheet add कर दो, where what you can do is add section wise कि तुम किधर तुम्हारा time marks per minute कैसा जा रहा है. Take your mocks, take whatever it is, या फिर just see कि overall तुमने इसके कितने questions देखे. What I say is तुम जब analyze करोगे, when you get the analysis from the classes, in that you understand कि sectionally भी and sectionally में topic wise भी तुम्हें मिल रहा है breakdown. So समझो अगर तुम्हें आरसी में ओवरऑल देखो कि मैंने आज के एग्जाम में 3 आरसीज थे तो उसमें 15 ऐड कर दो, मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे 5 पर आरसी होगा तो 15 क्वेश्चंस उसमें ऐड हो जाएंगे. 15 में से देखो तुम्हारा एक्यूरेसी कितना है. ओके, नाउ सी हाउ वेल यू आर गेटिंग देयर, सी हाउ बैडली यू आर डूइंग कंसिस्टेंटली इन अ टॉपिक. उस हिसाब से यू मस्ट अंडरस्टैंड कि तुम्हें कौन से टॉपिक पे ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत है, कौन से टॉपिक पे यू कैन लेट गो लिटिल. फॉर एग्जाम्पल फॉर मी LR was something that I could let go because मुझे पता था मेरा LR बहुत अच्छे से हो रहा है. Adnan, I have made a timetable for all of you. Don't worry. That is the final part that I'll come to in the end of the session. वो पूरा timetable मैं तुम्हें बताता हूँ. Okay? रोहित, तुम्हें C कैटेगरी के सम्स जब तुम मॉक दे रहे हो तब नहीं, when you are practicing अलग से ना, when I tell you कि 45 minutes practice then analysis, 45 minutes practice then analysis, that is when you'll understand कि कौन से questions C type के हैं.
कौन से टाइप के क्वेश्चंस सी कैटेगरी में जाते हैं. ओके, that is how you realize. And that is why guys I can't stress on this enough. Please start solving with my 45-minute वाला strategy. 45 minutes solving then analysis. जब मैं practice करने को बोल रहा हूँ ना, like what I say when you are practicing, 45 minutes practice and then analysis, 45 minutes practice then analysis. Do you guys understand? How many of you are actually doing it regularly? 45 minutes practice वाला. Adnan, call me up after the lecture. I'll explain you about it. Okay. Rohit, if you are not doing it, you have to start doing it. You have to start doing it, because trust me, there are people who have started using it and they are doing really good. Like Dhiren, for example, he's getting much better now. उसने भी काफी late चालू किया, but he has started doing it much better. Soumitra, call me up after the lecture. I'll explain it to you. Okay? I think you have forgotten. मैंने बोला था अपने one-to-one session में. Okay, guys. Now the final part of today's lecture, the most important thing. Day planner. This is a calendar for you guys. कि कैसे तुम कौन सी मॉक दोगे. Okay? Now I have made this in mind with keeping it in mind कि तुम सबके पास इतनी सारी मॉक्स नहीं है. There are a few of you who have 35-40 mocks. There are a few of you who have only 20 mocks. So I have made it 20 mocks के हिसाब से. इसमें तुम ऊपर से अपने भी चेंजेस कर सकते हो. Okay, yeah, anyone. Soumitra, don't worry. Even if you have just 20 marks from IMS, मैंने IMS की proctored and unproctored के हिसाब से बनाया है. But you guys can for sure always change it up. तुम जो भी classes में हो, जो भी marks use कर रहे हो, तुम इसमें डालो. But what I suggest is keep at least 1 day का distance during all your mocks. जब तुम start कर रहे हो, start में तुम्हारी हर mock के बीच में 2-2 दिन का at least distance होना चाहिए. After some time बाद में 1-1 दिन का distance रखोगे तो ठीक है. And finally तुम alternate day को mocks दे सकोगे. Okay? Now I've made this according to this. See, I'll show you. Okay, let me see कि वो schedule कहाँ पे है. Guys, can you see this? ये टाइम टेबल दिख रहा है तुम्हें? Now guys, understand this. यहाँ पे उन्होंने बोला है 8 से 11 तारीख के बीच में you can take the sim CET 1. This may be different. तुम लोग अपने क्लासेस तुम जो भी मॉक टेस्ट फॉलो कर रहे हो उस हिसाब से देखो. I'm just taking this as an example. इसमें बोला है 8 से 11 तारीख के बीच में you can take this mock. Now these mocks are basically which everyone who takes the mocks उनके बेसिस पे तुम्हें परसेंटाइल मिलता है जो ये पीरियड में लेंगे. You can compare yourself to them live. Like जब ये एनालिसिस खत्म होता है तब 11 तक मॉक देखोगे, 12 तारीख को तुम्हारे पास इसका एनालिसिस आ जाएगा. ओके गाइस, तुम 8 तारीख को भी मॉक दो तो भी 12 तारीख को एनालिसिस आएगा. तुम 11 तारीख को मॉक दो फिर भी 12 तारीख को ही एनालिसिस आएगा. देन व्हाट इज द प्रेफरेबल डे टू टेक द मॉक? Okay, everyone is saying 8th, no. 10th वाले भी no. 11th is the best day to take the exam. Because समझो, for all other exams, for all other tests, what you are going to do is analyze the mock immediately. You have to immediately start analyzing the mock as soon as your test is over. 1 घंटा 1.5 घंटा ब्रेक ले लो चलेगा, बट उसके बाद immediately mock analysis चालू कर दो. What you can do is जो तुम प्रॉक्टर मॉक दे रहे हो, प्रॉक्टर मॉक की तुम अगले दिन उसका एनालिसिस करो चलेगा. वो दिन बाकी कुछ प्रैक्टिस कर लो. वो दिन देखो कि वो मॉक में तुम्हें कौन से टाइप के क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे एंड वो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो.
एंड इसीलिए आफ्टर एवरी प्रॉक्टर्ड मॉक यू विल सी, ऑलमोस्ट आफ्टर एवरी प्रॉक्टर्ड मॉक यू विल सी मैंने एटलीस्ट 2 दिन का गैप रखा है. देखो यहाँ पे 3 दिन, यहाँ पे 2 दिन, यहाँ पे 2 दिन, 2 दिन 2 दिन. समझ रहे हो? एंड फाइनली व्हाट आई सजेस्ट इज द लास्ट the last 5 days you will not be taking any mock. The last 5 days you will be only revising the tricks that I've given you. Do you understand that guys? लास्ट 5 दिन एक भी मॉक नहीं देनी है. तो जो भी तुम्हारा प्रेपरेशन और वो सब होगा वो सिर्फ 8 मार्च तक होगा, उसके बाद कुछ नहीं. समझ रहे हो? एंड व्हाट डू, अगर तुम्हारा समझो 14, आई एम अज्यूमिंग कि 15 मार्च को सीईटी होगा, सेकेंड डे है. अगर समझो तुम्हारा 14 मार्च को सीईटी है, तो सीईटी के पहले वाले दिन तुम क्या करोगे? टेल मी व्हाट इज द वन थिंग दैट यू डू जस्ट बिफोर योर सीईटी का डे. हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर सीईटी? अरे अरे लोग थोड़े बहुत सीरियस हो गए रे. नहीं नहीं, what you simply have to do that day is, trust me, you don't analyze anything, you don't pick up the mocks, you don't revise my tricks, you literally do nothing all day long but just chill. If you guys like driving, just go fucking driving. bahar ka khana khao from a good place so that food poisoning na ho. Go and fucking work out, go for a drive, go for a swim, watch a movie for God's sake. मैं अपने पहले वाले दिन ड्राइव पे गया था, रात को 1 बजे घर आया था क्योंकि मेरा दोपहर का स्लॉट था. डोंट डू दैट यू गाइस, ओके? मेरा दोपहर का स्लॉट था इसलिए किया था मैंने. Wrong example to give. But yeah, what I'm trying to say is don't study anything. And for God's sake, if you are in any slot except except the first slot, if you are in any slot except the first slot, the one thing that you will never do is look at the previous slot ka analysis. There are fucking 20 videos on YouTube ke अरे ये टेस्ट, ये मॉक टेस्ट ऐसा था. There are a few people who go outside the centers and interview the students के अरे तुम्हारा मॉक कैसा गया, how was it difficult, was it easy, क्या था, कैसा था. Please don't watch those videos. And those people who are actually even doing that, please don't watch the videos. It's fine. Now understand this. You guys must understand कि हर person का same preparation level नहीं होता. And ना ही तुम्हारा exam will be based on what the previous exam slot was. You don't have to do that. It can be absolutely different. इस बार फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट एंड द सेकंड स्लॉट हैड एलआर कंपैरेटिवली, उनको क्वांट बहुत डिफिकल्ट आया था. हमारे सेक्शन में क्वांट बहुत इजी था, क्वांट बहुत ही चिंदी था, बट द एलआर वाज एब्सोल्युटली फाड़ू. हमें लगा था कि चलो एलआर टफ आया तो क्वांट भी टफ होगा, ओवरऑल एग्जाम डिफिकल्ट होगा, बट इंस्टेड हमारा इंग्लिश बहुत टफ था. द इंग्लिश फॉर आवर सेट वाज एब्सोल्युटली डिफिकल्ट एंड लोगों को नहीं जमा, जबकि सारे लोग इंग्लिश पे कूद गए थे. एंड इंस्टेड उन्होंने क्वांट उन्होंने देखने के पहले उन्होंने सीधा डीआई पे जंप मारा, which was not supposed to be done. वो लोग आराम से क्वांट सॉल्व कर सकते. It was very much doable. So make sure that you guys don't watch all these videos because that will just increase your stress. Are you understanding what I'm saying, guys? We will, before your CET, have a D-Day call. You guys can call me up even otherwise, but we will have for sure तुम्हारे CET के पहले मोस्टली 12th या फिर 13th को we will have another session जो मैं ऐसे ही Zoom पे लूंगा. जो भी डाउट्स वॉट्स है, जो भी पूछना है वो लोग को वापस पूछ लेना. इसके बीच में अराउंड I would say, okay guys, tell me one session I want to keep जिसमें 26 के बाद रखेंगे, 26 फेब के बाद कोई सेशन जिसमें तुम्हारे जो भी थोड़े थोड़े डाउट्स है, जो भी टॉपिक में तुम्हें थोड़ा और डिफिकल्टी लग रहा है, तुम्हें चाहिए कि मैं उसमें थोड़ा और ईज डाउन करके दूं, तो ये 26 से लेके 9th मार्च तक मुझे बोलो कोई भी एक दिन जब मैं ले सकता हूँ वो सेशन. ओके, नाउ यू गाइस टेल मी वो सेशन कब चाहिए.
यूनानिमसली डिसाइड, ग्रुप पे मैसेज डाल दो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. सो डिसाइडेड ऑन द ग्रुप एंड जस्ट पुट इट अप ऑन द ग्रुप. तो हम वो स्केड्यूल में अपने ऐड कर देंगे कि ये हमें ऐसे करना है. इज दैट फाइन? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स? Yes, yes, don't worry about it. मैं JB से एक दिन टाइम निकाल दूंगा. We will also look at how I will be comfortable. Mostly a Sunday we will keep it so that Sunday को मैं सारे students का एक साथ ले सकूं. Okay? I'll also try to keep it like a webinar, तो जो भी बाहर वाले students हैं उनको भी help हो जाएगी. सबकी help हो जाएगी. How does it matter? थोड़े दिन बचे. Okay? रोहित, अगर तुम ट्रिक्स भूल रहे हो इन द लास्ट फ्यू डेज, यू आर सेइंग कि लास्ट फ्यू डेज गैप है. लास्ट 2 दिन का गैप है, लिटरली 2 दिन का गैप है. वो 2 दिन के गैप में अगर तुम ट्रिक्स भूल रहे हो तो दो ट्रिक्स आर नॉट वर्दी ऑफ डूइंग इन द एग्जाम. तो वो ट्रिक भूल जाओ, इट्स फाइन. जो ट्रिक्स याद रहता है वही ट्रिक्स करना है, एंड ट्रिक्स याद रखने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करना है. ओके? चलो. So guys, I will send you the Excel sheet immediately. मैं अभी ही वो Excel जो फाइल है वो मैं डाल दे रहा हूँ अपनी ड्राइव पे. You guys can access it immediately. ये वीडियो as soon as हम लेक्चर एंड करेंगे मैं 20, 25, 30 मिनट में अपने ड्राइव पे डाल दूंगा. So you guys can access it again anytime. If you have any doubts about this, please call me up. Please put it up on the group. It's absolutely fine. And apart from that, does anybody have any doubt in analysis कैसे करना है? It's a very straightforward process, but the only thing is analysis में आलस मत करो. It is boring, it is time consuming, but it is necessary. Don't think that it is not necessary. Okay, guys? Yeah, it does feel like that. Chalo. Bye, guys. I hope this was helpful. Was this helpful to you guys? कैसा रहा सेशन? चलो, कुछ और चाहिए तो गिव मी अ कॉल. इट्स एब्सोल्युटली फाइन. चलो, एक puzzles after giving the mock solve करना है या फिर से? Yes, हितेश, सारे puzzles. Okay guys, this is a good question. सारे puzzles mock solve करने के बाद तुम्हें solve वापस करना है. You don't miss out on even the puzzles that you did right. Try to find the best way to solve that puzzle. Okay? That is a part of your analysis. हर puzzle वापस solve करना है. चलो. Anyway guys, we'll end the session. I hope this was really helpful. And trust me, this whole journey was amazing. I really enjoyed with you guys. Okay? Chalo.